Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I welcome you all into the video session of Cantab Publishers. I am going to teach you general science, and for that you need these 4 books. Number 1, the textbook of general science, CSS series, Cantab Publishers. Number 2, the summer pack. For doing your summer task, you need this book as well. And for having additional activities, you can avail this book, the workbook Science 3. And beside that, you can have a support of resource pack. And these all books are available on the official address of Cantab Publishers. So get ready, my dear students. We studied about basic food groups. Now we will going towards what we are eating in our daily lives. हम daily life में क्या क्या खाते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. And these are the few kind of foods we usually take in our daily routine. Fruits हम खाते हैं, vegetables भी हम खाते हैं, grains भी in our regular routine we eat, and after that meat भी और साथ में dairy products भी हम खाते हैं. Let's have a glance to see the text. Fruit क्या है? Fruits are good source of vitamins, minerals and fibers. Vitamins, minerals and fibers are very important for our lives. They are necessary to keep us healthy, to protect us from different kind of diseases. And then going towards vegetables are primary sources of essential vitamins and minerals. Dark leafy green vegetables generally contain the most of the nutrition and can be eaten at every meal. Examples include spinach, kale, green beans, broccoli and collard greens. So dear students, mostly आपने देखा होगा कि हम अपने खाने में भी खाते हैं और हम रॉ वेजिटेबल्स भी खाते हैं, जिसमें आप लोग कुकम्बर खाते हैं, जिसमें आप लोग कैरेट खाते हैं, इसमें आप लोग ऑनियन खाते हैं और ग्रीन चिलीज भी हम अपने रूटीन में खाते हैं. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ. और ग्रेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एज यू नो, wheat and maize are the most common grains that we use in our food. They are the rich source of energy. My dear students, remember, कार्बोहाइड्रेट होता है इसके अंदर, ग्रेन्स के अंदर, और कार्बोहाइड्रेट इज इमीडिएटली नीडेड बाय आवर बॉडीज. अगर हम खाना ना खा लें, यानी कार्बोहाइड्रेट इज अ रिच सोर्स, रेडीमेड सोर्स ऑफ एनर्जी. अगर हम खाना ना खा लें, कभी कभार आप ज्यादा गोश्त खा लें, आप ज्यादा गोश्त के साथ आप लोग फ्रूट भी खा लें, आप वेजिटेबल भी खा लें, आप मीट भी खा लें, आप डेयरी, लेकिन जब तक आपने ग्रेन्स ना खाए हो, जब तक आपने रोटी ना खाई हो, आपको वो क्विक एनर्जी नहीं मिलती. हाँ, उसके बाद क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कमिंग टुवर्ड्स मीट और इसकी इंपॉर्टेंट क्या है? मीट एंड बीन्स आर प्राइमरी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन which is essential for proper muscles and brain development. Meat such as chicken, fish, nuts, beans such as peas, almonds, sunflower seeds and walnuts are good source of proteins. इन सब से हमको प्रोटीन मिलता है और ये प्रोटीन हमारे सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है. उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स are cheese, milk, yogurt. They provide essential nutrients to our body. Their daily intake is highly recommended by doctors for growth of children. Always doctor says, as I stated in my previous lecture also, कि आपको घर में अक्सर अम्मी बाबा कहते हैं कि ज़्यादा आप लोग दूध पिया करें, आप लोग योगर्ट लिया करें, आप लोग बटर खाएं, और नाश्ते में भी नॉर्मली हमारी रूटीन का, हमारे ब्रेकफास्ट का हिस्सा होता है, जिसमें आप लोग योगर्ट भी खाते हैं, आप लोग चीज़ खाते हैं, आप लोग बटर खाते हैं और आप लोग मिल्क तो ज़रूर पीते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइव्स. एंड नाउ
Now again coming towards homework, and I'm damn sure that you will be doing all the activities given in the workbook as well as in the summer break. So best of luck my dear students. Allah Hafiz.